Assalamu alaikum bachcho, welcome to back my YouTube channel. Today we will discuss about the motion. बच्चों मैं मोशन का पहला जो टॉपिक आपका आता है that is the states of motion. States of motion. In motion, in physics, states of motion there are two states. There are two states. One is the state, one is the rest, and next is the motion. One is rest, next is the motion. Rest is also called as the stationary state. Rest is also called as the stationary state, and second one is that is the motion, that is motion. This is the first topic in motion, that is the states of motion. First all of you know that state of the motion is called as the kinematics. State of the motion is called kinematics. और जिस पर पहले इस पर जिसने काम किया था स्टेट ऑफ द मोशन बॉडी बेटा वो था दिस वाज कॉल्ड एज द फ्रैंक बी गिलब्रेथ. He was the first that is called as the father of motion study. Father of motion study. Her name was Frank B. Gilbreth, and study of the motion is called kinematics. What is rest? Rest is also called as a stationary state. For example, I am at rest because I cannot change its position with the time. For example, when I move, when I change its position from this corner to this corner, then we say that I am in motion. I am in motion. So what is rest? What is rest? A body is said to be in rest when it does not change its position with the time. It's called rest. बच्चों क्या होता है रेस्ट के अंदर? A position is fixed. Position is fixed. Example: trees, house, hospital, etc. They are all in rest. They are all in rest because they cannot move from one place to another. Next one, that is a motion. A body is said to be in motion when it changes its position with respect to the time taken as a reference point. It's called as a motion. It's called as motion. For example, blood flow in our veins like arteries, capillaries. ठीक है, ये सब किस में आते हैं बच्चों? Examples of motion. Planets, rotation. These are all examples of the motion. These are all examples of the motion. This is total about the rest and motion. In motion, reference point is must. For example, let us take a tree. ठीक है, जैसे बॉडी ए एंड बॉडी बी. बच्चों अगर आपको ये बोला जाएगा कि ये जो लड़का है ए लड़का एंड बी लड़का, ठीक है, ये लड़का इस दरख्त से 10 किलोमीटर दूरी पे है, ठीक है, एंड बॉडी बी ये इस दरख्त से 20 किलोमीटर दूरी पे है, ठीक है. तो ये जो यहाँ पे ट्री बन गया बेटा, ये बन गया इसका रेफरेंस पॉइंट. Reference point. This is also called as a origin. This is also called as origin. ठीक है, तो इन दो बच्चों का जो रेफरेंस पॉइंट बन जाता है, ठीक है, वो ये ट्री बन जाता है. ठीक है, अगर इस ट्री को हटाया जाएगा, ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि ये बच्चा 10 किलोमीटर दूरी पे है, ये बच्चा 20 किलोमीटर दूरी पे है, क्या आपको पता चलेगा कि किस दूरी पे है? ठीक है, किस पॉइंट से? नहीं, बिकॉज रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे नहीं है. सो इन मोशन रेफरेंस पॉइंट इज मस्ट. रेफरेंस पॉइंट का दूसरा नाम है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ओरिजिन. ओके, दिस इज अबाउट द रेफरेंस पॉइंट. दिस इज अबाउट द रेफरेंस पॉइंट. Types of motion. Types of motion. One is that is a uniform motion. Uniform motion. A body is said to be in uniform motion when it covers distance in equal intervals of time. For example, अगर कोई body A, body B, ठीक है, if the body A covered a distance along a straight line, for example, it will be equal to 10 किलोमीटर. ठीक है, अगर body A body B तक पहुंचती है, ठीक है, if the body A reaches to the body B, for example, car, ठीक है, अभी इसने कितने किलोमीटर निकाला? 10 along a straight line. So we say that this is called as a motion in a straight line, or we call the motion in one dimension. Motion in one dimension. That is motion in 1D. Motion in 1D. Okay, this is the motion in a straight line. This is also called as a motion in one dimension. Motion in one dimension. Next one, that is the non-uniform motion. Non-uniform motion is that type of motion a body covers distance but unequal intervals of time. For example, अगर यहाँ पे बच्चों हम ग्राफ लेते हैं, ठीक है, यहाँ से हम ले लेंगे टाइम, यहाँ से हम ले लेंगे बच्चों डिस्टेंस. ठीक है, लेट इट विल बी इक्वल टू 5, 10, 15, 20. इट विल बी इक्वल टू 1 आवर, 2, 3, 4. ठीक है, तो 1 घंटे में ये कितना डिस्टेंस कवर करता है बच्चों? दैट इज 5.
दूसरे में 10 किलोमीटर, 3 घंटे के बाद 15 किलोमीटर, एंड फोर्थ में ये कितना निकालता है 20 किलोमीटर। तो टाइम इज चेंज, ठीक है। अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, a body cover distance unequal intervals of time. This is an example of the non-uniform motion, non-uniform motion. So next one, that is non-uniform motion, uniform motion. Okay, next one, that is a linear motion, that is a linear motion. What is linear motion? What is linear motion? बच्चों लीनियर मोशन वो मोशन होती है व्हेन अ बॉडी कवर डिस्टेंस, जब कोई बॉडी डिस्टेंस कवर करती है अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। फॉर एग्जांपल इसके आते हैं बच्चों, दैट इज बाईपास, that is bypass. Bypass is an example of linear motion, and this is also called as a motion in Mandi, motion in Mandi. This is the first type of motion, that is the linear motion, linear motion. Next one is that is called as a random motion, random motion. Third one, this is also called as a circular motion. For example, circular motion, ठीक है। motion of planets, motion of planets revolve around the sun. This is an example of circular motion. This is an example of circular motion. Sun revolve around the planet. Sun revolve around the planets. This is an example of circular motion. Okay. So in circular motion there are two types. One is uniform circular motion. Next one is non-uniform circular motion. And third one, that is the oscillatory motion. Oscillatory motion. For example, simple pendulum. Simple pendulum. Okay, this is an example of oscillatory motion. Next one is that is called as a vibratory motion. This is called as a vibratory motion. A motion can be described by that's the distance, speed, acceleration, and displacement, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। तो इसको बच्चों समराइज करते हैं, ठीक है। हमने देखा कि मोशन जो फिजिक्स का पहला टॉपिक जो आता है दैट इज अ मोशन, उसमें आपके आते हैं दैट इज द स्टेट्स ऑफ मोशन, स्टेट्स ऑफ मोशन। इन मोशन वी से देयर आर टू स्टेट्स, वन इज स्टेशनरी स्टेट, नेक्स्ट इज द motion. A stationary state, this is also called as rest. State of the motion is called as kinematic. State of the motion is called as a kinematic, ठीक है। इसका जो फादर ऑफ स्टेडी मोशन दिस कॉल्ड एज अ गिलब्रेथ, क्या नाम था उसका, गिलब्रेथ, ठीक है, याद रखना। तो a body is said to be in rest when it does not change its position with the time, is called as a rest. For example, trees, ठीक है, plants, house, this marker board, this is all in rest. A motion is body is said to be in motion when it change its position with time, taken as a reference point. reference point का होना जरूरी है किसके अंदर, मोशन के अंदर, ठीक है। इसके बाद हमने देखा टाइप्स ऑफ मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, लीनियर मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। इसके रैंडम मोशन, वाइब्रेटरी मोशन। तो मोशन को हम डिस्क्राइब करते हैं बच्चों डिस्टेंस, स्पीड, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है। नाउ इन काइनेमैटिक्स, इस मोशन के अंदर बच्चों आपको तीन इक्वेशंस पढ़ने हैं, दैट इज एक्स माइनस टी, कॉल इट इक्वेशन फर्स्ट, ए माइनस टी, वी माइनस टी, ये तीन इक्वेशंस आपको पढ़ने हैं बच्चों 11th में, ठीक है। जब वहाँ पे पढ़ेंगे हम काइनेमैटिक्स, पढ़ेंगे काइनेमैटिक्स, दैट इज अ स्टडी ऑफ मोशन, ठीक है। दीज थ्री इक्वेशंस आर कॉल्ड एज अ काइनेमैटिक्स इक्वेशन, This is total about the states of matter.
मैटर। ओके बच्चों, आज हमने पढ़ा स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेटस ऑफ मैटर, दैट इज रेस्ट एज वेल एज इन मोशन। ओके, दिस इज टोटल अबाउट द स्टेट्स ऑफ मोशन। थैंक यू।